ready है क्या? Yes, yes. Okay. Yes, over to Sheetal. Respected resource person of today's program, Dr. S.B. Kishor sir, all the participants and my colleagues. As you all know that we have started online lecture series on MS Access, and today's session is devoted for doubt clearing. You students might have gone through the videos we are uploading on your WhatsApp group, and you might have gone through all the activities, and also you are going to get the solutions to your problem in this particular session. So Dr. S.B. Kishore sir, who is a resource person, will clear your doubt. So dear students, take maximum benefit of this session and ask the questions whatever you're going to have regarding MS Access and whatever videos you might have seen till the date. So over to you, sir. Thank you, Sheetal. So, dear students, first of all, before going to start the session, if you have any specific doubt, you can ask me. Otherwise, I will elaborate the entire session about the topic that we have covered so far. Yes, dear students. अगर आपको कोई डाउट होगा अभी तक का आपने जो देखा है उसमें तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन. अदरवाइज आई विल स्टार्ट द सेशन. Okay, no issue at all. So I am sharing my screen. Hello, sir. Yes. Some students are having a problem like they are unable to see the videos and all. So can you please explain the steps how they have to start? Yes, I will. I will just wait for a few students to join so that I will start. I will explain all those things within a moment. Okay. Yes. Okay. Because it might be possible that many students may join within a moment. So in the meantime, so let us see, dear students, what we have done so far. In the essays, we have created one database with the name student admission. Sorry, with the name admission in our last session. Okay. So I am simply opening it, nothing else. And under that, if you remember, we have created one table with the name called as admission. So remember, a single database may have a n number of tables. A single database may have a n number of tables. So under this, we have created one table with the name called as admission now. In order to view the structure of this table, what we need to do, simply right click and simply click on a design view, nothing else. Okay, let me show you once again. Simply right click and then select what? Design view. Now, so far we have created with only 4 fields. The first one is what? RNO, and where data type is what? Auto number. It means all the numbers will be generated automatically. We don't need to enter any number against this column. Then the second column is what? Yes name, and we are defined its data type is what? Short text. Short text means what? You can enter up to maximum 255 character. Under the short text, you can enter maximum 255 character. And we have reduced this size up to 30 because we know that maximum length of the student is not going to exceed more than 30 characters. That's why we have specified here 30. Then the class is again what? Short text. Then we have specified a mobile number, and data type is what? Number. Data type is number, and the field size is what? Single. Okay. Why single? Because the range, the mobile number is consist of how many digits? 9. So it means the figure is quite long, and it is it is not possible for us to store that particular value within a byte, because the size of the byte is what? 0 to 255. While in integer, the maximum value is what? 32767. 32767. It means 5-digit number only. So we need some bigger number. So the long integer is able to store up to 8 number digit number. Okay. So again, it is not possible to store a number within a long integer. So we are what? A single. Okay. So single is useful to store your mobile numbers. Then we are going to add few more
Now, if you want to add any more column over here, what you can do, simply select and then right click, insert row. At any moment, you are able to add a new column. So it's my suggestion, before entering any single values, first of all, make sure that your table structure is correct. Otherwise क्या हो जाएगा, सपोज आपने पूरे 20 एक रिकॉर्ड एंट्री किए और उसके बाद आपको याद आया कि एक कॉलम अपना छूट गया है डिफाइन करना. Then if you are defining that column later on, then what you need to do, उस particular column के against में सभी values, सभी rows में आपको क्या करना पड़ेगा, values enter करना पड़ेगा. That is a very cumbersome job. Okay, so make sure that you have included all the columns properly before entering any record. So my second column is what? L name. Assume this is my first name, F name. L name. Then we are going to enter few more columns, say DOB called as date of birth. The data type is what? It is a date. Then we are going to add one more column called as mobile DOA, say date of admission. DOA, date of admission. And finally, we are going to add one more column called as whether the fee is paid by the student or not. Or you can say take sex, whether student is male or female. Yes, no. Okay, so answer will be what? Either yes or no. So after entering all the fields, make sure to close this. So what it is going to do? It is going to save the structure. So simply click over here. It will ask whether would you like to save this table? Yes. And now simply double click over here. So what will happen? You will be in a data sheet view. This is called a data sheet view. So you have basically two types of views. One is called data sheet views and the second is what? Design views. In design view, you will be able to see the structure of the table, while in data sheet view, you will be able to enter a record or you will be able to edit the record. Editing record means what? You may add few new records or you may modify certain record content or you may delete. Okay, that is what the meaning of altering. Now, we are going to enter certain, say, records here. Suppose the name is, suppose, say, Anand. Name, say, Thakre. Date of birth. Either you can enter here manually, something like this, or there is another way. I will let you know within a moment. Then specify the class, say BCA, first year. Mobile number, say something I am entering. I am not checking whether it is a 10 digit or not. And the second method is what? Entering the date using this, what? Auto calendar. So simply select it and then double click over here in order to change the year. This auto calendar is basically useful whenever you would like to enter the, say, current month date. In that case, this is very well. But if you want to enter a date of, say, 1970s, in that case, this is not that much useful. Okay, remember the advantages of this. So again, I am entering the today's date only. So that is what? 28 to 2022 and sex, male or female. Enter another one, say Niha Rika. Subramaniam. Okay, date of birth 12 to 2000. I am making here 22. Okay, say BCom. Okay, BCA only, BCA first year. I am entering a negative number. Okay, and see here what I am doing. I am entering some previous date of admissions, 12 to 2021. Now let me know whether it is a correct answer, correct entry or wrong. Yes, dear student, whether it is a correct entry or wrong entry. Yes, dear student, what do you feel? Whether it is a correct entry or wrong entry? Yes, dear students, what do you feel? ये करेक्ट एंट्री है कि रॉन्ग एंट्री है ये पूरी? उसका डेट ऑफ बर्थ हम 22 का दिखा रहे हैं और उसका डेट ऑफ एडमिशन कब दिखा रहे हैं? 21. सो डू यू थिंक इट्स अ करेक्ट आंसर?
unmute yourself and say, or you can also put your answer in chat box, no issue. Say yes, wrong or correct. Yes, Wrong, dear. sir. Wrong. Why? Because because डेट ऑफ बर्थ के पहले एडमिशन कैसे हो सकती है ना? सिमिलरली ये मोबाइल नंबर नेगेटिव रह सकता है क्या? No. No. Okay. It means we are not entering a proper data. So all these entries are what? No doubt these are the dummy data, but still it is a what? Wrong. So how to overcome all these things? That is what we are going to discuss within a moment. Okay. Before that, now I am going to create one more table. I would like to create one more table. So how to do it? So I am creating a table under this and now create design views. Again, I am creating one field with the say RNO or say roll number. Data type is what? Number. Then say marks of physics, number, marks of chemistry, number, and marks of say computer paper, number. Okay. Save it. Yes. Name the table. Suppose the name of the table is say exam. So now we have basically, do you want to create a primary key? No. For a time being, no. Okay. Later on, we will discuss what is exactly primary key. So right now we have basically how many tables over here? We have a two tables. Now there is a concept called as managing the table. There is a concept called as managing the table. So what do you mean by managing the table? So basically under the managing the table, you will be able to perform three basic operations. The first one is what? You will be able to rename the table. Okay, I am giving a proper name. Simply right click and specify the new name, examination. Okay, then there is another one is what? Deleting the table. You can select the table and simply click on the delete. Now please remember, the moment you will click on the delete, it will delete the table as well as it will delete the table. It means what? It will delete the structure as well as all the data that has been stored in that particular table. But by giving a warning, are you sure that you want to delete this? Okay, if you are confirmed, you can simply click no. Okay, this is the second operation that you can do under the manage table. And the third one is specifying a detail about the properties. Specifying what? A description about that particular table. So you can write this table is useful to store the marks scored by the students in exam. Okay, so these are the three operations that comes under the managing the table. Please remember, the first one is what? Changing the name of the table. Second one is you can delete the table, and last one is what? Giving a certain description for that particular table. So these are the three operations that you can do under what? Managing the table. The next one is altering the structure of the table. Altering the structure of the table. Again, here we have three options. Let's see one by one. So simply select the table and now click on design view. Okay. First one is if you want to add a new field, you can. How simple? Is paid, suppose I am selecting yes or no, whether student has paid the fees or not. Okay, this is the first one. Second one is suppose I want to delete a certain field, simply select it and then right click, delete rows. Okay, this is the second one that you can do. See, it is giving again a warning. Are you sure that you want to delete this? The moment you will click on yes, what will happen? It will delete the class as well as all the associated value that has been associated with the class, that also is going to get what? Delete. So be sure. So I am clicking on yes. Okay. Now once again I am adding, but here insert row class. Okay, short text only. So this is the second operation. You can add the column, you can insert a new column anywhere, you can also delete. Okay, not only that, you can also change what? A table properties. For example, instead of short
text, I would like to keep it as what? Long text. Or assume that I would like to have one more column, say description. I defined initially it as a short text, but later on I thought that it might be possible that certain student may need to specify more detail. So in that case, as all of you are aware, in short text, we will be able to store how many characters? Only 255. Now, if you want to store a more than 255 character, what you need? You need to specify it as a long text. Remember, if you want to specify a more uh, if you want to specify more description about the student having more than 255 character, then it is not possible to store that data within a short text. In that case, you need to define it as a long text. Okay. So these are the three operations that comes under what? Altering the table of the structure. One is what? Deleting the column, or you can also add the column, or you can also change what? A certain data type from one to another. Okay. So these are the three operations. So now we manage table, and second is what? Altering the structure. Altering the structure means what? We are calling it as a structure of the table. Okay. So altering the structure means you can change the name of the you can change what? You can add a new column, or you can change the data type, or you can also delete certain columns. Okay. So this is the operation that comes under what? Altering the structure of the table. Now we will add a few more columns over here. Assume that I would like to enter here after L name, I would like to have one column, say CT. Okay, initially I am keeping it as a short text only. Later on, I will change it. Then date of birth, mobile number. Then here I would like to insert one more column, say email ID. Okay, again I am taking it what? Short text only. Later on, I will change it. Okay, that's all. Now try to save the structure, and now double click on the admission and make the entry once again. Say Jyoti. Okay, Walecha. City, say Chandrapur. Date of birth 12 to 1999. Mobile number I am entering. Then email ID, say Jyoti email.com. Let us assume ECA first year. Date of admission 13 3 2022. Sex. Okay. Now observe here once again what is happening. First of all, we will try to change the proper. We would like to enter a proper data. Now, what are the things that I would like to change? I want whenever I enter a name, first name, in whatever format it may be, in whether it might be possible that certain case letters are in a small letter and certain case characters are in what? Uppercase. I want everything should be in a capital. मैं चाहे small letter में लिखूं या capital में लिखूं, I want this entry should consist of what? A capital letter only. While in this case, L name, I would like all this should be in a small case letter. ये मुझे सब कैपिटल में चाहिए. मैं किसी भी फॉर्मेट में एंट्री करूं, ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली स्मॉल में होना चाहिए. तो लेट्स ट्राई फर्स्ट टू थिंग्स. तो एडमिशन टेबल को हम फिर से ओपन करेंगे डिजाइन व्यू में. शॉर्ट टेक्स्ट एल नेम. देखिए यहाँ पे फॉर्मेट क्या लिखा है? यहाँ पे फॉर्मेट में आपको क्या करना है? ग्रेटर देन सिंबल लिखना है. दैट्स ऑल. ठीक है. और शॉर्ट टेक्स्ट में आपको क्या करना है? फॉर्मेट में लेस देन करना है. नाउ चेक इट. क्लोज करें हम इसको. लेट्स ट्राई. डबल क्लिक एंड नाउ देखिए सब अपने आप कैपिटल हो गया है. लेकिन पुराना डेटा क्या हो गया? आपका लॉस हो गया है. इसलिए हम क्या बोलते हैं हमेशा? पहले स्ट्रक्चर अच्छे से बना लो, उसके बाद ही आप अपना काम करो. नाउ लेट अस सी. नेम हम डाल रहे हैं स्मॉल लेटर में, कविता. ओके. एंड नाउ मैं टैब दबा के नेक्स्ट इसमें जा रहा हूं, तो अपने आप क्या हो रहा है? जस्ट मोमेंट.
Just a moment. Let's check. First name. Oh, sorry, number नहीं है, short text हो ना. Small letter में हम एंटर कर रहे हैं कविता, और इसको गोड बोले. ठीक है, ये अपने आप हो गया. इसका कविता का नहीं हुआ. एक मिनट चेक करते फिर से. डिजाइन व्यू में यप नेम फॉर्मेट वैसे के वैसे ही रह गया था, ग्रेटर देन नहीं किए थे हमने. और रियल नेम का क्या है, स्मॉल में चाहिए था हमको, तो ये लेस देन चाहिए. लेट टेक वन मोर एग्जांपल. से करुणा. ओके, अपने आप कैपिटल में हो गया. जोशी. देखते हैं क्या हो रहा है. कैपिटल में डालेंगे हम, कुछ लेटर कैपिटल कुछ स्मॉल. देखिए अपने आप क्या हो गया, वो स्मॉल लेटर में हो गया. इट मीन्स व्हाट, we are enforcing what, a certain constraint which will automatically convert the entries in whatever format you may enter. It will automatically convert into what, a capital letter, while in this case it will automatically convert into the what, small case. So कैसे किए एक बार फिर से देख लो. डिजाइन व्यू, फर्स्ट नेम. ओके, क्या किया हमने फॉर्मेट में, क्या किए, ग्रेटर देन. while in real name हमने क्या किए, it should be a less than, that's all, nothing else. ओके. नेक्स्ट वैलिडेशन जो हम करने जा रहे हैं, देख लो एक बार. हमको चाहिए कि बाय डिफॉल्ट सिटी, क्योंकि मैक्सिमम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कॉलेज अगर एसपी कॉलेज चंद्रपुर में है, तो यही मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहेंगे वो चंद्रपुर के ही रहेंगे. तो सो आई वांट ऑटोमेटिकली वहां पे एंट्री क्या आ जाए, चंद्रपुर आ जाए, किसी को एंट्री करने की जरूरत ना पड़े. सो हाउ इट कैन पॉसिबल, लेट्स सी. डिजाइन व्यू में जा रहे हैं हम, सिटी में जा रहे हैं हम, सिटी कॉलम को, और यहाँ पे ले रहे डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू चंद्रपुर. ओके, फॉर्मेट मार्क्स मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, फॉर सिटी के लिए. अब चेक करते हैं, क्लोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे. यस. देखिए यहाँ पे अपने आप क्या आ रहा है, चंद्रपुर की एंट्री. आप जो भी नाम डालना है डालो, सपोज. ओके, अपने आप कैपिटल हो गया. तो ये अपने आप स्मॉल हो गया, और इसको मुझे एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है. ये एंट्री क्या हो रही है, अपने आप आ रही है. ओके. नेक्स्ट वन. अभी हम थोड़ा मोबाइल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, और डेट के कॉलम के क्राइटेरिया कैसे देते हैं, विद इन मोमेंट हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अ मोबाइल नंबर. डिजाइन व्यू अगेन, मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लो. मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. नाउ यहाँ पे देखिए वैलिडेशन रूल रहता है. वैलिडेशन रूल ये है कि उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ मोबाइल नंबर रहना चाहिए इक्वल टू 10 रहना चाहिए. अगर ये नहीं रहता है तो मुझे क्या आएगा, एरर आना चाहिए. तो एरर क्या आएगा, तो उसका मैं टेक्स्ट यहाँ पे बता रहा हूँ. मिनिमम 10 कैरेक्टर्स, 10 डिजिट, मिनिमम 10 डिजिट शुड बी देयर. लेट्स ट्राई. तो वी हैव एंटर्ड व्हाट, वैलिडेशन रूल क्या है. वैलिडेशन रूल में हमने बताया कि लेंथ ऑफ मोबाइल नंबर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10, एंड वैलिडेशन टेक्स्ट इज व्हाट, मिनिमम 10 डिजिट शुड बी देयर. और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रॉन्ग एंट्री है ये, रॉन्ग एंट्री, मिनिमम 10 डिजिट्स. नाउ लेट अस ट्राई. मोबाइल नंबर के लिए हम डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं. मैं खाली 2 डिजिट एंटर कर रहा हूँ और टैब दबा के नेक्स्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो क्या हो रहा है, रॉन्ग एंट्री. मिनिमम कितने डिजिट रहने चाहिए, 10 रहने चाहिए. ओके. लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के लिए ट्राई करते हैं, देखते क्या हो रहा है. रॉन्ग एंट्री अगेन. ओके. 10 डिजिट कर रहे हैं अभी. अभी कोई एरर आ रहा है क्या. 1 2 3 4.
Just a moment. मोबाइल नंबर, डेट एंड टाइम नहीं, ये क्या है? नंबर है। लेंथ ऑफ मोबाइल नंबर शुड बी इक्वल टू 10। एक चीज आपको ध्यान देना है, ये मोबाइल नंबर हम क्या लेंगे, इसको शॉर्ट टेस्ट लेंगे, क्योंकि लेंथ फंक्शन हम यूज करेंगे, तो लेंथ फंक्शन यूज किसके लिए लागू होगा? लेंथ फंक्शन टेक के लिए लागू होता है, नंबर के लिए नहीं। तो वैलिडेशन इक्वल टू लेंथ ऑफ मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 10। एंट्री कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट ट्राई। एरर 10 डिजिट। Just a moment, all of you. Anyone tried validations? Yes, any one of you have tried validations? किसी ने ट्राई किया क्या वैलिडेशंस? We will see all the criteria one by one within a single table. Within a single table, you will be able to see. It is perfectly correct. Mobile number equal to 10. Not equal to 10 होगा तो let's try. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, नॉट इक्वल टू 10 होगा तो मतलब अगर 10 नहीं होगा तो क्या आएगा, आपको एरर आएगा। लेट ट्राई दिस वन। ओके, length of mobile number is equal to 10. Wrong entry, minimum 10 digits. It might be possible that we have already entered so many data. So I will do one thing. I will try over here mobile number, because this table does not contain any data. Hello, Santosh sir, mute yourself. एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
रॉन्ग एंट्री आ रहा है। किसी को भी रॉन्ग, सभी को रॉन्ग एंट्री आ रहा है वो। Okay, no issue. Okay, dear students, we will discuss about this issue within a moment. In the meantime, we will try some other uh, validations. So here देखिए यहाँ पे क्या रहा है, someone में enter, गलती से कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। ओके, कोई इस तरह से भी लिख सकता है गलती से। So I don't want that kind of thing. I want everyone should be entered properly. इसका मतलब I would like to give the selection option and from that student should select what a option. तो ये कैसे पॉसिबल है? तो डिजाइन व्यू में ओपन कर रहे हैं उसको, क्लास को शॉर्ट टेक्स्ट की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे, we will take here lookup wizard. Instead of short text, we will say what? Lookup wizard. And now simply click on the next button over here. टेबल का नाम सिलेक्ट करो, एडमिशन टेबल। कौन से फील्ड के ऊपर करना है हमको? सीटी फील्ड के ऊपर करना है। क्या क्या ऑप्शन रह सकते हैं वहां पे? बीसीए फर्स्ट ईयर, एक मिनट, सिटी, नेक्स्ट सिटी, ओके, नेक्स्ट what sort order do you want to attempt for this ad? So we would like to in city only. नेक्स्ट, कौन से ऑर्डर में चाहिए आपको डेटा? तो पहली वैल्यू क्या रहेंगी आपकी? पहली वैल्यू रहेंगी आपकी बीसीए, it is changing the columns automatically. We will do one thing, we will first of all delete all the records. Okay, just a moment. Blank database. Create design view, serial number. It should be auto. RNO number. Then first name, short text, L name, short text. Then we will have what? City, short text for a timing. Then date of birth, date column, mobile number, MNO suppose, number, and email ID, short text again, date of admission, date, and finally fees paid or not. Yes, no. Okay. So out of that, we all discussed first name should be what format? Greater than. That is the only thing we have done. In short text, it should be less than. For city, I want a default name should be what?
Default value should be Chandrapur. Okay, I'm going to add one more field over here. Insert row, say class. It should be a lookup wizard. I will type the values I want. Simply select this one. I will type the values that I want. Next, specify the values. First one is say BCA first year. Okay. Then BCA second year, and then BCA say third year. Okay. And finally click on the next button. Finish. That's all. Okay. Now try it. Do you want to save table? Yes. Say the name of the table is say admission. There is no primary key defined. So would you like to define? No. So Aryano, no issue. First name, typing in a small letter, it will automatically convert into capital. Okay, say now typing in a capital letter, it is automatically converted into the small letter. Default value is what? Chandrapur, no issue at all. Date of birth, so far we are not taking any kind of validations. Now class, observe that from here, what I am doing, I am selecting one of the values. Okay, it means now no one is going to make any kind of wrong entries. No one is going to make any kind of wrong entries against this particular column. Okay, so in this way you will be able to create what? Lookup wizard. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, लगे तो देख लो क्या करना है. एडमिशन में we will delete this record. एडमिशन में गए, डिजाइन व्यू में क्लास को सिलेक्ट करना है. इसमें हम क्या करेंगे? लुकअप विजार्ड बोलेंगे. Lookup wizard में I will type the value that I want. Select this one, then click on the next, then specify the value that you would like to have. Say BSc first year, say BCA first year, BSc IT first year, or BCom first year, or MCM first year. You can specify as many values. It is not compulsion that you should have only one or two or three, something like that. Okay, then click on the next button, and then simply click on finish. Okay, and now close this table. और देख लो एक बार फिर से एडमिशन टेबल के ऊपर डबल क्लिक करो और यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्लास में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पूरे के पूरे वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं. सो व्हाट इज एडवांटेज? यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ रॉन्ग एंट्रीज. Okay, so using lookup wizard, you will be able to create what? You will be able to give a list of options to your students, and from that they are going to select one of the values. Clear to all of you? Now we will try for our MNO, mobile number. Once again, we will try for mobile number. Let's check what is going to be happen. Default values. अच्छा, before that, ये जो नंबर है, नंबर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? निगेटिव नंबर हो रही है. निगेटिव नंबर को भी एक्सेप्ट कर रहा है. हम चाहते हैं कि निगेटिव नंबर ना रहे, तो हाउ इट कैन पॉसिबल टू अवॉइड इट? डिजाइन व्यू में गए, आरएनओ को सिलेक्ट किए, एंड नाउ वैलिडेशन रूल शुड बी व्हाट? शुड बी ग्रेटर देन 0. वैलिडेशन रूल, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, वैलिडेशन रूल greater than 0, and validation text what? Can't be negative. Let's try it. Data integrity rules will change. Okay, yes. Try for this. Now negative entry करने की कोशिश करो. क्या आ रहा है? Can't be negative. मतलब जब आप नई एंट्री करेंगे पॉजिटिव करना पड़ेगा. अगर आप नेगेटिव एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या आएगा? एरर आएगा. ओके, सो हाउ कैसे पॉसिबल हुआ ये? एक बार देख लो फिर से. पॉजिटिव कर देते हैं. What we have done? Again RNO अंडर द वैलिडेशन रूल क्या लिखे हमने? इट शुड बी ग्रेटर देन 0. उसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए.
और हमने मैसेज क्या दिए, कांट बी नेगेटिव. ओके, नाउ वी सिमिलरली विल ट्राई फॉर द MNO आल्सो. लेट ट्राई फॉर MNO. Equal to length of MNO should be equal to 10. Okay, then here wrong entry should be 10 digits. ये एरर क्यों आ रहा है बार बार बार? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हमने एंट्री की है, तो वो क्या हो रहा है, वो वायलेट हो रहा है क्योंकि उसमें 10 डिजिट नहीं है, इसलिए ये इस तरह के हमको बार बार एरर आ रहे हैं. ओके, लेट ट्राई फॉर दिस. निगेटिव एंट्री डाल रहे हैं तो एरर आ रहा है, कांट बी नेगेटिव. ओके, हम पॉजिटिव कर देते इसको 51, कोई प्रॉब्लम नहीं. मिडल नेम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, अपने आप कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है. इसको भी स्मॉल कैपिटल में लिख रहे हैं, अपने आप स्मॉल में हो रहा है. देन क्लास यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. MNO. लेट ट्राई 45 डालने की कोशिश कर रहे हैं. Wrong entry should be what? 10 digits. Okay, now let's try 10 digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And now tap. Okay, no problem. No problem at all. Design view MNO. Let's try to convert it into the short text. Length of MNO should be equal to 10. Length of MNO equal to 10. And now wrong entry. Wrong entry, it should be 10 digits. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 digit. Okay, no issue. We will discuss about the MNO in our next session. Don't worry about that. So in the meantime, we will discuss some few more. What are they? A date of admission should not be greater than the current date. A date of admission should not be greater than the current date. So how it can possible? Validation rule specify in this way. Greater than, इसका मतलब क्या रहना चाहिए? Less than equal to current date. It should be less than equal to current date. Wrong entry. Let's try. डेट ऑफ एडमिशन अभी हम डालने की कोशिश कर रहे हैं करंट डेट से बड़ी. करंट डेट है 1/4/2023. लेट ट्राई. क्या रहा है? रॉन्ग एंट्री. वही अगर हम 22 करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, so let's see what we have done. We have specified date of admission का वैलिडेशन रूल क्या है? इट शुड बी लेस देन द करंट डेट. करंट डेट से क्या रहनी चाहिए? छोटी रहनी चाहिए डेट. दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट डेट ऑफ बर्थ. वैलिडेशन रूल कैसे रहेगा? वी आर अज्यूमिंग दैट कि बीसीए फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो उसकी मिनिमम एज कितनी रहनी चाहिए? 17 रहनी चाहिए. मिनिमम 17. सो हाउ इट कैन पॉसिबल टू स्पेसिफाई सच काइंड ऑफ कंडीशंस? ओके, लेट्स सी.
फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो इसको, समझने की कोशिश करते हैं आप। करंट डेट, डेट फंक्शन क्या बताता है हमको? करंट डेट बताता है। डीओबी क्या है हमारा? फील्ड का नाम है। तो करंट डेट माइनस डेट, डेट माइनस डेट हमको क्या बताएगा? नंबर बताएगा। प्लीज रिमेंबर, देखो डेट, एक डेट में से दूसरी डेट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमको नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम किसे डिवाइड कर रहे हैं? 365 से, 365 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं? उस फ्रैक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो हाउ इट कैन पॉसिबल? बाय मींस ऑफ इंटीजर फंक्शन। So it will ignore all the fraction values, and then we are comparing whether it is greater than 17 or not. Okay, so you need to specify such kind of validation against a date of birth. Let us enforce this one, and now specify validation text. Age is not greater than 17. वैलिडेशन टेक्स्ट में हमने इस तरह से लिखा। चेक करते हैं इसकी वैल्यू। यस यस, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं हम। सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 12/2, ओके, 2010। तो क्या आएगा? ये एरर आना चाहिए। ठीक है, नहीं है। 2008 करके देखते हैं, नहीं है। ओके, 2005 is accepted. ओके, सो व्हाट वी आर टेकिंग हियर, मतलब जो एंट्री हो रही है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट की एज मिनिमम कितनी चाहिए? 17 ईयर्स रहना चाहिए। और 18, अगर आपको 18 करना होगा तो 18, जो भी आप कंडीशन देना चाहे वहां पे आप कंडीशन दे सकते हैं। हाउ? वंस अगेन लेट्स सी। फॉर डेट ऑफ बर्थ अगर आपको 18 देना है तो आप 18 करो, 19 करना होगा 19 करो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हो। अगर आप नर्सरी के हिसाब से बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप नर्सरी के हिसाब से आप जो भी डेट होंगी वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर? अब चेक करते हैं हम 18 के लिए। 18 के लिए ट्राई करो। 12/2/2008, नहीं है। 18 4 होगा तो यस, एक्सेप्टेड। ओके, इन दिस वे वी आर एबल टू चेक फॉर व्हाट? अ डेट ऑफ बर्थ की प्रॉपर वैलिडेशन। तो ओवरऑल व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ वैलिडेशन? टू एंटर अ प्रॉपर डेटा, दैट इज व्हाट द ओवरऑल गोल ऑफ द वैलिडेशन। नाउ ऑब्जर्व दैट मैंने यहाँ पे ईमेल में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा किसी ने ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ओके, लेट्स सी। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, ईमेल। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करके एक ऑप्शन है। रिक्वायर्ड करके क्या हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो उसको क्या करने का? यस बोलने का। तो यस बोलने का, बाय डिफॉल्ट नो रहता है, उसको बोलने का यस। अब ट्रिक चेक करो इसको। तो आपको लगता होगा कि कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, तो उस समय में आप क्या करेंगे? रिक्वायर्ड कॉलम को क्या करेंगे? यस करेंगे। लेट्स सी। मैं यहाँ पे एंट्री कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ तो देखो क्या होता है। टेक्स्ट मैसेज मुझे देना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे मैं पूरा ब्लैंक छोड़ते हुए जा रहा हूँ और आगे जा रहे, फिर से टैब दबा रहा हूँ। ईमेल अलाउ जीरो लेंथ, नो। 1 मिनट, और एक कॉलम है यहाँ पे, नो। एडमिशन, डबल क्लिक। यहाँ पे ब्लैंक रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी। Okay, anyway, dear friend, so we are going to discuss these two problems. First one is what? Of your mobile number, and the second one is of your required field, that we will discuss in our next session. So before that, before continuing further, if you have any doubt, you can ask me here.
Yes. यस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, नो डाउट्स। वी विल डू वन थिंग, यहाँ पे फिर से मैं एक वैलिडेशन रूल कर रहा हूँ, इज नॉट नल, कांट बी ब्लैंक। लेट्स ट्राई इट फॉर यफ नेम। पहले एंट्री कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं ब्लैंक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। So there are two types of what validation. One is called at column level and one is what at record level. एक रहता है फील्ड लेवल पे और एक क्या रहता है रिकॉर्ड लेवल पे। तो इस तरह के जो रूल है जो सबसे लास्ट में जाके चेक करता है कि सभी कॉलम की वैल्यू आपने प्रॉपर्ली दी है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम रिकॉर्ड लेवल पे चेकिंग। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है, कांट बी ब्लैंक। तो ये किसके लिए आ रहा है, इज नॉट नल के लिए। लेट डिजाइन व्यू में हम जा रहे हैं, यफ नेम ले रहे हैं और यहाँ पे क्या रूल डाले हमने, वैलिडेशन रूल, इज नॉट नल, मतलब वो नल नहीं रहना चाहिए। नल मीन्स नाइदर ब्लैंक, नाइदर इट इज अ ब्लैंक स्पेस, नाइदर इट इज जीरो। दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ नल। So you need to specify is not null. Same thing you can do for real name also, and same thing you can do for your email also. अगर आपको लगता होगा कि उसमें भी एंट्री होनी चाहिए कंपल्सरीली, so that you can also do. Now instead of short text, I will take here attachment. Instead of short text for email, I will take here attachment. So what is the meaning of this? The attachment. You can't set email to attachment data type. You can add a new field instead. Okay. आप चेंज नहीं कर सकते, तो आई विल डू वन थिंग, मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से ऐड करता हूँ ईमेल एंड नाउ अटैचमेंट। और यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट हाइपरलिंक, सॉरी, यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द हाइपरलिंक। एडमिशंस में जा रहे हैं हम, 34 फर्स्ट नेम योगिता पुणे, ओके, 12/3/2003, ओके। क्लास मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली, MNO, फिलहाल ब्लैंक छोड़ रहे हैं हम। ईमेल मैं मेंशन कर रहा हूँ सपोज यहाँ पे sbk.social, देखिए अपने आप क्या आ रहा है वहां पे, ईमेल फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट, आई विल लेट यू नो विद मोमेंट। 23/2/2022, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये मेल में चले जाएगा। देखो, अगर मुझे लगा कि स्टूडेंट को मेल करना है तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हम क्या कर सकते हैं, इसको मेल कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक एडवांटेज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग व्हाट, हाइपरलिंक। या फिर अगर आप कोई वेबसाइट देते होंगे तो वहां पे वेबसाइट में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इसकी जगह सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ugc.ac.in। ओके, डबल क्लिक कर रहे हैं तो इट विल ओपन व्हाट, द यूजीसी वेबसाइट। इट विल ओपन द यूजीसी वेबसाइट, मतलब आप कोई भी हाइपर लिंक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हो। Okay, that is the advantage of what, this hyperlink concept when you are attaching with any columns। मेल अगर देते होंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे वहां पे टू में मुझे नाम देने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप वहां पे टू में क्या है, उसका नाम वहां पे अपने आप, उसका ईमेल आईडी अपने आप चले जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी रॉन्ग एंट्री होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो रिमेंबर डियर फ्रेंड, द ओवरऑल पर्पज ऑफ दिस इज व्हाट,
to enter a proper data. That is what the basic concept of validation. And make sure before making any entry, you have specified all the validations rule in your table. Otherwise, you may face all such kind of problem. जैसे अभी हमको बार बार वो बोल रहा है ना, वैलिडेशन रूल्स आपका वायलेट हो रहा है. वायलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वैलिडेशन रूल अभी लगा रहे और उसके पहले के डेटा को वो रूल लागू नहीं कर सकता रहा है. इसलिए क्या आ रहा है, वो बार बार हमको वार्निंग्स आ रही है. So before making any kind of entry in your table, make sure to enforce all your validations rule. Enforce all the validations rule in for each and every column that you would like to enforce. Clear, all of you? Yes, किसी को कोई डाउट अभी? We will discuss about the two things later on. The first one is about mobile number. I need to check once again. Apart from that, if yes, anyone, Bhuvan, Dhanashree, Neha, Prajakta, Priyanka, Sabina, are you facing any kind of issue? Sir, can we create the new data types by using existing? Pardon? Pardon? Sir, can we create new data types by using existing which are present in Access? No, derived data type. उसको हम calculated column बोलते हैं. Yes, we can. Okay. How it possible? Let's see. We need to first of all create one more table. Let's see. We are calling it a derived column. Table design. Again, create one more table. Say RNO. Data type is say number. Column say physics. Number. Chemistry. Number. And now math. Okay, let's try. टेबल 1 को हम नाम दे रहे हैं सपोज एग्जाम. डू यू वांट टू क्रिएट प्राइमरी की? नो. नाउ एग्जाम टेबल पे जा रहे हैं हम. रोल नंबर हम एंटर कर रहे हैं 123. फिजिक्स में मार डाल रहे हैं 45. केमिस्ट्री में 67 एंड मैथ में सपोज 78. नाउ व्हाट आई वांट अ टेबल शुड बी total marks should be displayed over here automatically. Similarly, I would like to have a percentage automatically. I don't want to make any kind of entry for that purpose. So how it can possible? It is possible by means of what? A lookup calculated column. Okay, so how to do it? Right click, design view, and now select here so a total, or instead of short text, what you can do, you can select a calculated. Okay, so specify physics plus, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स. ओके, नाउ फाइनली क्लिक ऑन ओके. तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया? कैलकुलेटेड कॉलम आ गया. नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू हैव व्हाट? अ परसेंटेज. एन calculated, select the calculated, and now here again what? Total divided by 300. We are assuming each paper is of what? 300 अपना 100 marks. So total will be what? 300. So total divided by 300 multiplied by 100. Or you can also simply divide it by 3, nothing else. Okay. Okay. And now let's check what is going to happen. एग्जाम टेबल में देखो अपने आप ये आ गए यहाँ पे मार्क. Now 120, suppose second student number 89 and now 92. अपने आप क्या आ रहे हैं उसके टोटल मार्क्स और उसके परसेंटेज अपने आप आ रहे हैं. ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम्स में आ रहा है एक्सप्रेशन? अप टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 15 डिजिट तक का आता है बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट. ओके, सो यू कैन चेंज इट. डिजाइन व्यू में जाके परसेंटेज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट में सिलेक्ट अप टू नंबर्स फिक्स 2 डिजिट. ओके, फॉर्मेट में हमने क्या किया? उसको फिक्स कर दिया. देखो अब क्या हो रहा है? अप टू 2 डिजिट्स आएगा फ्रैक्शंस में. ओके, सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू क्रिएट व्हाट? डिराइव्ड कॉलम. इसको बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पे? हम कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं. वी आर कॉलिंग इट्स अ कैलकुलेटेड कॉलम. ओके, डेटा टाइप इज व्हाट? कैलकुलेटेड कॉलम.
Okay, we will discuss about the attachment and folio objects in our next period, in our next class. Okay, so now in the meantime, what you need to do is that many of you are not watching the videos, and without watching the videos, it might be possible that you are directly joining this particular session. So, what you need to do, all of you, observe that we have already given the link of our this website to. We have already shared the link of this website with all of you. ओके, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, वीडियो लिंक्स मिलेंगी। तो जैसे कि वीडियो लिंक्स, ये देखिए कल आपके साथ वीडियो शेयर किए गए थे। तो कितने वीडियो शेयर किए गए थे, 2 टॉपिक, एडिंग एंड एडिटिंग द रिकॉर्ड, देन हाउ टू नेविगेट सिलेक्शन एंड डिलीटिंग एंड सॉर्टिंग द रिकॉर्ड। तो पहले आपको क्या करना है, इसको देखना है, इस वीडियो को क्लिक करो, वहाँ पे उस वीडियो को पूरा देख लो, अच्छे से समझो, उसमें से जो भी आपको डाउट्स आते होंगे उसको नोट डाउन करो। बिकॉज देखो, most of the videos it just consists of 10 to 15 minutes, not more than that. It means you need to spend hardly half an hour, not more than that. Okay, so after watching these videos or while watching the videos, whatever the doubt that comes in your mind, simply note it down, simply note it down. So you need to watch both these videos, और ये 2 videos आपको कितने दिन में देखना है, आपको 2 दिन में देखना है। Because we are sharing the 2 videos after every each day, alternate day, we are sharing after every alternate day, we are sharing the 2 videos. So it is not going to consume much more time of you. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में आप एक वीडियो देख रहे हैं, दूसरे दिन में दूसरा वीडियो देख रहे हैं, एंड वॉट एवर द डाउट दैट यू आर फेसिंग, सिंपली नोट इट डाउन एंड यू नीड टू आस्क दोस डाउट ड्यूरिंग द सेशन ओनली. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द सेशन टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एंड आफ्टर वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज, असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं। देखिए पूरे डे वाइज आपको असाइनमेंट्स अभी तक की जितने भी हुए हर एक डे के, मतलब जो जो वीडियोज आपने देखे उसके हिसाब से आपको क्या है, उसके असाइनमेंट्स है। तो सिंपली असाइनमेंट पे क्लिक करो। All these assignments are based on what? The video that you have watched. The video contents आपने जो भी देखे होंगे उसके हिसाब से ही है। आपको मतलब इस तरह का एंट्री करना है टेबल में, इस तरह की आपको एंट्री करनी है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेरीज करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल द असाइनमेंट, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एट द एंड एक लिंक देंगे हम आपको। क्या करना है, डे वाइज एक लिंक बना के रख लो, पीडीएफ फाइल बना के रख लो, जो भी असाइनमेंट्स है उसकी एक सिंपली पीडीएफ फाइल बना के रखना है आपको, with the name day. With the name of that file is what? Day 4, something like that, or day 3 assignment. At the end, you need to upload all this your PDF file. We are going to provide you one link जहाँ पे आपको क्या करना है, ये पूरे links जितने भी आपके day wise है वो सब link आपको वहाँ पे क्या करना है, attach करना है. And finally, you have what? Quiz again. Again, it is an alternate day. 4 वीडियोस की क्विज है, 2 वीडियोस की नहीं, 4 वीडियोस में देख के आपको क्या है, वहाँ पे क्विज है, और आपको एवरी डे, मतलब जो भी डेज आपको आ रहे हैं उसकी आपको अटेंडेंस क्या करना है, मार्क करना है यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा फॉलो करना है। अब आपके हो सकता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह का नहीं दिखे, आपको टैबलेट में अगर आप काम करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा आपको लुक, और यहाँ पे देखो ये 3 बार आ रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, और फिर वीडियो लिंक पे क्लिक करके आपको जो भी वीडियो यहाँ पे आएंगे उसको देखना है। ओके, और मोबाइल पे होंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा सेम। वीडियो लिंक पे क्लिक करो, देन सिलेक्ट द डे, जो भी डे होगा यहाँ पे क्लिक करो, एंड देन एक्सेस वॉच द बोथ द वीडियोज वन बाय वन, एंड देन अटेम्प्ट योर असाइनमेंट, देन मार्क योर, देन try the quiz, and finally mark your attendance of the day. In this way you need to complete your session. It is not assumed to explain all those things during this what a doubt session. डाउट सेशन क्या के लिए रहना चाहिए, प्योरली डाउट के लिए रहना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू? So we will try for the mobile number our validation in our next session. That is the only thing left. And in our next period, we will discuss about what. Now here we have how many records? Only 2 or 3 records. It might be possible that you may have a 200 of record. Then how to search the particular record, how to navigate the record. So these are the some of the options that we are going to discuss in our next videos. Okay. जो अभी आपका आज जो आपको जो वीडियो अपलोड किया उसमें वही है,
जितने ज़्यादा आपके रिकॉर्ड एंट्री रहेंगे उतने ज़्यादा आपको क्या है वो इन सब का पता चलेगा कि सर्च कैसे करते हैं, फिल्टरिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ओके, जिसको बोलते हैं हम नेविगेशन ऑफ रिकॉर्ड कैसे करते हैं. So try to enter as many as record rather than having 20 or 30. Try to enter as many as record that is possible for you. Okay. So that is all from my side. Now, if you have any still doubt, you can ask me. Sir, whether we have to solve our assignments in Access or in books, simple books. In SS only, obviously, आपको क्या करना है, SS में ही करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन जैसे आपका ये टेबल स्ट्रक्चर बना के बता बोले, इसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेने का. सेव करके आप क्या कर सकते हैं, सेव एज, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है तो आप क्या करने का, उसको सेव एज करते जाने का. जो भी आप नेक्स्ट असाइनमेंट करते जा रहे हो उसको सेव एज करते चलो. पहला असाइनमेंट में क्या रहेंगे, आपके जो भी पहले असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वहां पे आएंगे. फिर सेकंड असाइनमेंट करते समय सेव एज करेंगे. सेव एज करने से क्या हो जाएगा कि नया जो हमने क्वेश्चन असाइनमेंट दिए वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, नए इसमें मिलेंगे. क्लियर? मतलब आपका डेटा भी कॉपी हो जाएगा पूरा वहां पे सेव एज करने से, और आपकी जो नई एंट्रीज वो भी उसमें रहेंगी. क्लियर भूषण? Yes, sir. Thank you, sir. Any more? So again, it's a kind request to all of you to go through the video only. Then only it is possible for you to come with a certain doubts. Otherwise होगा वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उतना ही आप पढ़ रहे हो. We are not expecting such kind of interactions. We are expecting the doubt sessions. So that is what all from my side. Over to Sheetal or Santosh, whoever it may be there. Thank you, sir. Thank you very much. Hope, dear